begin. Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Aadi. आज है Saturday afternoon, and this is going to be the second last show of General Narayan for the year. तो guys, सबसे पहले नमस्कार, good afternoon करते हैं जनरल नारायण को. Welcome to the show, sir, and looking forward for an amazing afternoon. Yes, thank you, Jai Bharatam. Pleasure to be back on the actual time. जो Saturdays को होता है, not on a Friday. Yes, and let us look at what is going on in our neighborhood. कि the old deep state काफी फड़फड़ा रहा है. So we can go through the slides थोड़े जो बनाए हैं मैंने. I'd like to look at our neighborhood and extended neighborhood. People अभी बता देता हूँ, एक्सटेंडेड नेबरहुड मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया है. अभी हमारा फुटप्रिंट बड़ा हो गया है तो थोड़ा बड़ा किया है. सो वी विल डिस्कस इट देयर. चलो देखते हैं एक के बाद. सबसे पहले बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे को कि यार तुमने ये विक्टोरिया न्यूलैंड को क्या कर दिया है, यहाँ पर इतना डाल दिया, रात को नींद नहीं आएगी ये फोटो देख के. माय अपॉलॉजीज. बट गाइस एक्चुअली लुक और उसको नींद ना आए. हाँ, उसको देखो, keep looking at her. That is one thing very important. So let's get into the presentation, guys. Like. Let's go. So this is Geopolitics, games around elections and neighbors. हमारे भी इलेक्शन हो रहे हैं और जनवरी में तो अभी बांग्लादेश के भी इलेक्शन हो रहे हैं और एक मालदीव्स में हो चुका है. So let's look at the next slide. So this gives the broad purview. तीन मोटे मोटे हिस्से: immediate neighborhood, extended neighborhood और जो ओल्ड डीप स्टेट के फुटप्रिंट्स अभी भी बचे हुए हैं उसका क्या करना है. ठीक है, और लास्ट में फिर एक वे हेड भी बता दूंगा. ब्रॉड सम थॉट्स ऑन दैट. नेक्स्ट. सो वी आर लुकिंग एट द इमीडिएट नेबरहुड इज द फर्स्ट वन. सो एक मैप के साथ समझाया है मैंने. शैल वी गो देयर? हाँ जी सर. या सो लेफ्ट पे टेबल है, राइट पे मैप है. ठीक है, हालांकि सार्क के कंट्रीज कलर्ड हैं, चाइना भी एडेड है जो वाइट में है. तो ये सारे आपको दिखा रखे हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स. ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं. ठीक है, वो अलग बात है, हम तिब्बत को तिब्बत बोलते हैं, तिब्बत हमारा नेबर है. आज के दिन चाइना ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो हमारे साथ है. और बॉर्डर लेंथ पूरा दिखा रखा है. कई लोग सोचते हैं कि बीजिंग का हमारे साथ बड़ा बॉर्डर है ना, बांग्लादेश का है. बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, चौथे तरफ उसका बे ऑफ बंगाल है. तो बांग्लादेश इज 4000 प्लस, बीजिंग इज क्लोज टू 3500. ठीक है, 9 देश हैं जिसमें से 7 का लैंड बॉर्डर है और 2 का मैरीटाइम सी बॉर्डर्स है, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स. टोटल जो हमारा लैंड बॉर्डर है इज ओवर 15,000 किलोमीटर्स. लार्जेस्ट मैंने बताया बांग्लादेश का है, सबसे छोटा इस भूटान का है. ठीक है, और म्यांमार 1643 है हमारे साथ, काफी लंबा है हमारे साथ. तो अभी एक एक करके लेते हैं नेबरहुड वॉच. पहले लेते हैं अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में इज फेसिंग अ प्रॉब्लम. कोई उसको एक्सेप्ट फॉर चाइना जिन्होंने उनके एम्बेसडर को रिकॉग्नाइज कर लिया है, nobody has recognized them and they are having an issue with Pakistan. They are having internal issue. खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, ड्रग्स उन्होंने बंद कर दिया है. तो it will be more money they'll make, I think, on gun running and black market and what else is remains to be seen. कि और कहाँ से ये पैसा बनाएंगे लोगों को खिलाने के लिए. गन रनिंग का तो एक है ना, हक्कानी नेटवर्क ने दे दिया होगा. जो अभी पूंछ में हमला हुआ था उसमें तो अमेरिकन हथियार यूज हुए हैं, विच वाज लेफ्ट बिहाइंड देयर.
सो दे विल ट्राई टू डू दिस कि हमको हमारे लिए जो चाहिए वो रख के बाकी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्रग ट्रेड बंद हो गया है। नाउ दैट क्रिएट्स एन इशू फॉर अस because the non-state actors of Pakistan who are controlled by the ISI will again get weapons, otherwise उनके पास पैसे नहीं है तो हथियार और ammunition, and that will be used against us, and it is related to Pakistan. पाकिस्तान बिल्कुल फक्कड़ है, एंड यू नो फाइंड आसिफ मुनीर गया हुआ है वहां पे, यूएसए मिलने मिलाने आया है। क्या करने गया था वहां पे, किस लिए उसको एक्सेप्ट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उसका क्या लेना देना। यानी यूएसए ओल्ड स्टेट अपीयर्स टू बी बैक टू स्क्वायर वन, कि द पाकिस्तान ऑफ ओल्ड, जिसको डीओडी wanted to destroy them, but it is the secretary of state, the department, state department, which is उनको पुचकार के रख रहा है, CIA and state department. So it looks as if they are back to the same game. But क्या करना चाहते हैं, लगता है कुछ अफगानिस्तान के साथ करना चाहते हैं। अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट के तरफ तो ये छोटे मोटे जैसे हमारे हो रहे हैं JNK में, वो करने की कोशिश करेंगे। बट द लार्जर फियर इज, आर दे ऑल्सो वर्किंग विद अफगानिस्तान वांटिंग टू स्प्रेड द इस्लामिस्ट आइसिस। आफ्टर ऑल थाने के पास तो एक लिबरेटेड विलेज पकड़ा गया था, जहां से वो पकड़े गए NIA के। तो ये नेक्सस थोड़ा आपको अभी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और हर दूसरे तीसरे दिन आपको खबर आ जाती है NIA ने कौन से नेक्सस को तोड़ा है, रेड मारी है, रेड मारा है, तोड़ा है, क्या किया। वहां से आते हैं नेपाल, क्रूशियल स्टेज पे है, अभी कस्प पे है। जनवरी में एक बार हुआ था और अभी दिसंबर के शुरू में भी हुआ था, वेयर दे हैड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड रैलीज ऑन टू थिंग्स, कि भाई रॉयल्टी को वापस लेके आओ, ये प्रेसिडेंटशिप निकालो, एंड declare Nepal back again as a Hindu Rastra and not secular. Okay. Now the biggest question mark क्यों आता है, जब ओली और दाहाल के बीच में ब्रेकअप हो गया तो नेपाली कांग्रेस का देवबा इज द वन हु हैज सपोर्टेड हिम। सो प्रचंड इज एक्चुअली रनिंग ए minority government with the support of Nepali Congress. And that people, what reports are coming up, has been with the support of US and India. India भी उसके support में नेपाली कांग्रेस के. So with that one action, they have been able to keep China relatively at bay, and all these are coming up. But the moment you remove the word secular and make it Hindu Rastra, State Department in US we know is totally full of the old deep state. I don't think they'll be very happy with that. फिर क्या होगा? So that's why I say Nepal जो है, you have to be very careful to see किस तरफ जाएगा। क्यों? अगर नेपाल पूरा चाइना के पाले में चला गया ना, आपका एक और फ्रंट खुल जाता है कि भाई PLA can attack you through Nepal. So UP border becomes critical. UP, Uttarakhand, all these places become critical for you कि भाई वहां से भी हमला हो सकता है। Bhutan, all said and done, is still with you. The king respects you. We have a lot of respect to the king. बोलने के लिए पार्लियामेंट है, but whatever decision they say, finally the final decision rests with the king. जी. Okay. So China is pushing. ऊपर वाले बॉर्डर में वो जबरदस्ती घुस रहा है, अपना इलाके में कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है, ये उसका पुराना है, ट्राइंग टू पुट प्रेशर। बट व्हाट हैपेंड, द पार्लियामेंट एंड द PM डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर चाइनीज, खत्म होने के बाद तो ही केम टू इंडिया, द किंग केम टू इंडिया टू डिस्कस, एंड बंद है। सो अगर नेपाल में हेडवे नहीं हो रहा है तो Bhutan will come under pressure, and I am quite certain that our
diplomats and our Eastern Command are quite adept in being able to support Bhutan. Bangladesh is a worry. 2 महीने तक तो ये नूलन शूलन सब बहुत प्रेशर ला रहे थे उसके ऊपर. Peter अभी Hawes. चुपचाप है. I hope she wins again, because if she doesn't, Islamists come, then it is a big threat to India. It is a big threat to India. So Massive threat. I'm Yes, sir. certain our diplomacy and others are working with Sheikh Hasina to win her. म्यांमार में अभी तो थोड़ा चाइना बैकफुट पे है. इसके ऊपर हमने टॉक भी किया था. मल्टीपल लेयर्स आ गए हैं. अभी तो रखीन स्टेट को भी कंट्रोल में ले लिया है उन लोगों ने. So virtually North Myanmar and the arc coming into Rakhine state is with all these people. The three brother alliance ने कब्जा कर लिया. जी. So that's why you find that थोड़ा बहुत कुछ चलता है in Manipur. Not much. Now that dynamics will change अगर बांग्लादेश में वो चेंज हो जाता है, because then free run आ जाता है आपको into Assam. We should not forget when शेख हसीना के पहले वो क्या नाम है उसका, जिया की बीबी का, खालिदा जिया, when she was there, ये अपना परेश बरुआ ऑफ उल्फा was based there, और वहां से पूरा गन रनिंग होता था. वेपन्स, चाइनीज वेपन्स यूज्ड टू कम एंड लैंड इन चिटागोंग, और चिटागोंग से फिर पूरा ये चिटागोंग हिल ट्रैक से पूरा ये अंदर घुसता था टू द नॉर्थ ईस्ट. जब से शेख हसीना आई है, ये रुका है, तो वो निकल के चला गया रुईली. अब ये होने के गन रनिंग वहां से करता था. अब ये जैसे ही चेंज हुआ है तो ब्लॉक हो गया. तो अब हमने ब्लॉक किया है, अच्छी बात है, बट यू गॉट टू कीप अवेयर कि अब व्हाट नेक्स्ट बाय द चाइनीज. The Chinese may also be interested in a regime change in Bangladesh. So we have to, our diplomacy and others, RAW and others, have to be careful to see that this regime change doesn't take place. श्रीलंका डांवाडोल है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ. चाइनीज वो सर्वे वेसल आके चला गया हम्बन टोटा. अब वो ऑर्डर पास करते हैं कि हम किसी के जहाज को आने नहीं देंगे. तो he needs money. क्योंकि चीनियों को लाने दे रहा है, IMF is not playing ball, giving him money. Yeah, so he has to be careful. But बात ये है कि रनिल विक्रमसिंघे भी उनके ब्राउन साहिब में से है. Same, yeah, absolutely, sir. Very. कोई अंतर नहीं है उसमें. तो वो क्या कर लेगा? So it is a country where you need to give support through the people and work with them. Maldives, अब उसको समझ नहीं आ रहा है. यूइजू ने तो शोर शराबा कर दिया, ज्यादा पुश नहीं किया, तो यामीन ने तो तोड़ के पार्टी, अपना पार्टी अलग बना लिया. अभी कह रहा है मैं बात करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. अब कोस्ट गार्ड की शिप उसने वापस भेज दी है. हमने कहा हम उसको रेनोवेट करके हम इस्तेमाल कर लेंगे. अब उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई यार, इसी ही इज ऑलमोस्ट पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर. एयर एसेट्स भी हट गए ना? हैं? एयर एसेट्स भी हट गए. सब हट गए वहां से. रोएगा भी. अब वो गलती ये कर गया है कि गया है टर्की होके आया है. जैसे पहले अपने योगी जी के पहले यूपी में वो कहते थे ना कि नोएडा जिसने इलेक्शन टाइम में आ गए तो वो हार जाता है. तो मैडम मायावती आई थी, वो हार गई. फिर अखिलेश आया, वो हार गया. तो अगली बार अखिलेश गए ही नहीं वहां पे. एंड इट इज योगी जी हु ब्रोक दैट कंप्लीट. ही केम टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब करके गए एंड इज वन अगेन. टर्की का ये है जैसे पाकिस्तान वहां गया बिल्कुल फक्कड़ हो गया. अब ये गया है, क्या करेगा? पैसे तो है नहीं. टूरिज्म है, आज के तारीख में चाइना का टूरिज्म बिल्कुल फट हो चुका है. When you read about China, the tourism has gone down the drain because most of the tourism was funded by the government. The maximum tourists today in Maldives go from India.
one word by the Indian government and you stop those tourism, क्या करेगा? So that is why he's caught between the devil and the deep sea. He doesn't know what to do. I think we need to handle him appropriately. I won't say carefully, and he will turn around. क्योंकि अब यामीन का छाया उसके ऊपर से चला गया है. So he should be asked to chart his own path and not be with Yamin and start mouthing what he says. And last but not the least, China is the elephant in the room. He wants to break the Himalayan barrier and come. So पहला पासा नेपाल में फेल हो गया, भूटान की कोशिश कर रहा है, वो फेल हो गया. मैरीटाइम में बांग्लादेश में कोशिश किया था, थोड़ा बहुत हुआ था, अभी खत्म हो गया है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगेन इट इज इम्पोर्टेंट. रेजिम चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेजिम चेंज जैसी होगा वो सारे पोर्ट शॉट उसको देने शुरू कर देगा, सब उल्टा हो जाएगा. करेक्ट, उल्टा हो जाएगा. ठीक है. श्रीलंका अटका हुआ है, श्रीलंका में अटका हुआ है, कभी कभी हम्बन टोटा में आ जाता है. ही इज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन हम्बन टोटा पोर्ट एंड द हम्बन टोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Running that without any ships coming, it costs money. 35 ships in a year. 35 ships in a year, sir. It costs money to maintain that port. So yeah. China is losing a lot of money. इसलिए कई बार मैंने अपने शो, आपके शो में भी बोला है, अलग प्लेटफॉर्म्स में भी बोला है, अलग सेमिनार वेबिनार्स में भी बोला है कि हम बार बार बोलते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बीआरआई ऑन दीज नेशंस की डेट ट्रैप हुआ है. मैंने कहा भाई रिवर्स देख लो यार, बीआरआई में इतना खर्च कर दिया, चाइना के इकोनॉमी को क्या हुआ है, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट. तो आई हैव आस्क्ड इकोनॉमिस्ट बट आई डोंट थिंक दे हैव ट्राइड टू डू दैट, बट इट इज वेरी विजिबल. इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कि इज डाउन द ड्रेन. पाकिस्तान इज पाकिस्तान, बट सीपेक इज गॉन. अब तो अब वी डोंट इवन हियर ऑफ चाइनीज शिप्स गोइंग टू ग्वादर. अब इतना बड़ा पोर्ट बना दिया तुमने, अब क्या करोगे उस पोर्ट का? हाउ विल यू गो मेंटेन दैट पोर्ट? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सो द बिगेस्ट वरी इज द सेपरेट टॉक्स आपने भी किए हैं, हमने भी किए हैं, ऑफ शी जिनपिंग बीइंग एट हिज वीकेस्ट टुडे. And there are a lot of internal pressures that are coming on him from the people, from his party, from PLA, and of course pressures from outside. Economy is going into the drain, and now the latest corona JN1 variant has come. They are looking at a lockdown. You go to lockdown again, you are into recession. अभी उसको पंगा ये था कि इकोनॉमी में his is a export based economy and they import a lot of resources and make it. So he has been avoiding devaluing the yuan, because then the cost of production will become high. Okay, but now if he closes it, yuan becomes toilet paper. So when such things happen, autocrats are known to hit out. So where will he hit out? And so we have to be careful. So this 2024 is going to be a landmark year for us. We have to be on our watch, because jab I'll discuss the issues about this with the old deep states jab discuss karenge. You got to be very careful. अपने elections आ रहे हैं, बांग्लादेश के elections हैं, तो क्या क्या होगा और उसके बाद भी क्या क्या होगा. We got to be alive to that and understand what are the challenges in multiple domain Bharat is going to face. Already all around, except for Bhutan, to a certain extent Myanmar, thoda bahut Sri Lanka, baki sabka to you got to be very careful kya hone wala hai, and it creates a direct threat to you. जैसे इसी साल कुछ स्पाइस पकड़े गए थे चाइना के, वो तो Nepalese passport लेके आए हैं यार. Now that is the cause for worry. Nepalese passport to Chinese. No, these are the issues that you got to be very careful of, and that's why I have not kept Nepal out of the watch. You have to keep it under watch. Bhutan, yes. Myanmar at the moment, yes. Sri Lanka at the moment, because of its own problems, yes. All the others you got to keep in watch.
कि भाई साहब यहाँ से आपको इमीडिएट नेबरहुड से थ्रेट आ सकता है, बिकॉज they are all unstable. Even China today, I would rate it as a highly unstable country. Next. I mean, before sir, Yeah. चाइना का तो एक और बड़ा बोलते हैं ना फोपा हो गया है. Hmm. The merchant vessel, that MV Challenger, जो which was the first vessel to get hijacked, जो हूथीज ने सबसे पहला vessel hijack किया है. न्यूज में तो ये आया कि भाई that thing gave SOS calls. Yeah, जो and their Japanese ship was close by and they didn't respond. the Japanese ship was there, Indian ship was there, American ship was there, and the Chinese ship was there. Chinese ship, it seems, was just at about 50 kilometers from this place, and the rest of the They were ships closest and were didn't respond. almost 200, 300, 400 nautical miles away. They heard and they started moving. Chinese ship was the closest, and I'm saying this in English so that our Chinese friends who are there should know this. This is their ethics of the military. The Chinese ship was 50 miles, not nautical miles, 50 miles from that distressed ship. On an SOS call, the Chinese turned around and went the other direction. उनका वही प्रॉब्लम है ना, they have to listen to what the big boss says. So now we look at the extended neighborhood. Next. मैप में दिखाया है मैंने. हम केवल बोलते हैं कि भाई फ्रॉम द सुएज कैनाल टू द मलाक्का स्ट्रेट्स. ना जी, अभी हमारा रशिया के साथ व्लादिवोस्टॉक चेन्नई का डील भी हो गया है. वी आर वर्किंग विद ईरान, वी आर वर्किंग विद आर्मेनिया. हम इजिप्ट, एरिट्रिया वगैरह के साथ नहीं है. वी वुड लव टू गो अबाउट डूइंग इट. साउथ अफ्रीका वी हैव विद नामीबिया, एंगोला. सो ये पूरा ग्रिड है जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और ये मैं अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड बताता हूँ, which includes East Asia, which includes the South Pacific Islands, which includes Australia and New Zealand, which includes eastern coast of Africa plus the hinterland of Africa, goes into West Asia, takes care of Central Asia, Caucasus and Russia. यहाँ तक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. आज के तारीख में आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन what is happening in Europe. As long as we have some technology deals like with France and others, it's okay. बाकी लड़ लो आप ही आप, किस तरह से करना है, how you want to survive, you're welcome to survive. So let's go country by area. इसको region by region लेते हैं. So interestingly, Ukraine is not part of our this thing, but Israel is. Of course. Of course. Where has Ukraine ever supported us, yaar? Oh no. इतना रोता है. He has never supported us on Kashmir. He has never supported us on our issues with China. Why should I support him, yaar? Oh, Ukraine has been relegated to the As dustbin you of the sow, history. so you reap. Yeah, it's relegated to the dustbin of And history. Israel has always stood by us. Yeah. Russia has always stood by us. तो ये मेरे areas of interest हैं. बाकी गई तेल लेने. Absolutely जी. Zelensky the cartoon feels bad. ठीक है यार, बना ले तू कार्टून सानू की. स्टैंड अप कॉमेडियन है, कर लेना उस पे कॉमेडी यार. मेरे को क्या Keep feeling bad. We'll send a regret letter. Yeah. चल, let's go area by area. So you have East Asia, you have ASEAN, you have South Pacific. ANZ is Australia and New Zealand. The Southern Indian Ocean region, which has Mauritius, Madagascar, Seychelles, all those islands. East coast of Africa, I have also taken the hinterland. West Asia and North Africa, Central Asia and Caucasus. When you look at East Asia, again, you have a declining China and you have a maverick in North Korea. And both Japan and especially South Korea has sincere doubts on the nuclear umbrella of USA. Americans, yes sir. Why? They have done their security arrangement with Philippines.
फिलीपींस शिप को चाइनीज शिप तंग कर रहे हैं, इनके इंडो पैकॉम से अभी तक एक जहाज वहां नहीं गया है कुछ नहीं है। फिलीपींस की मदद करने। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो जहाज उधर जाना था, दे डिप्लॉयड इट टू द रेड सी। So now just imagine people in West Asia, that is why they are now turning and looking towards becoming nuclear. Now that becomes a dangerous thing because more and more countries, more and more places, these weapons you get, you never know which maverick will press the button. और अभी तो 3 मैवरिक तो हमारे पास ही हैं, हमारे वेस्ट पे, हमारे नॉर्थ पे है और एक नॉर्थ कोरिया में है। तो किस वक्त कौन सा बटन दबा दें हमें पता नहीं। And there is a standoff which is going on not only in Senkaku Islands, but China is fomenting trouble in Okinawa also for the Japanese. There are strikes and all taking place. They want their independence and they are talking the Chinese language and they are talking all pro-Chinese. China is good, China is this. So it is very clear कि उनका पैसा बोल रहा है. So East Asia is on the boil and South Korea is most worried about it, and even Japan. When you look at ASEAN, the most disjointed organization that you can have, which the Chinese have moved in economically and other in such a way economically that in most places they control about 12 to 15% of the GDP of these countries. ठीक है. देयर इज अ बुक, पिछली बार भी बताया था, चाइना's एशिया ड्रीम, पढ़ लेना. आई थिंक थॉमस मिलर और somebody is the author. Thomas Miller, I think. So if you look at here, ऊपर से चलो, वियतनाम हाँ आंखें दिखा रहा है, बट about 12% of their GDP is controlled by Chinese investments. लाओस कंबोडिया तो छोड़ ही दो, वो कुछ नहीं कर सकते. कंबोडिया ने तो चाइना इनसाइड, या कंबोडिया ने तो अपना नेवल बेस रियाम दे रखा है, विच इज इन गल्फ ऑफ थाईलैंड. वो तो हो चुका, वो तो उनके पास चला गया. व्हेन यू लुक एट थाईलैंड, यू नेवर नो क्या होगा, बिकॉज द किंग ऑफ थाईलैंड हैज बीन टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द Chinese. It is only the army which is not permitting the Kra Canal to come. So now the Chinese have come up with a different this thing. One port which is on the Bay of Bengal, the other port on the Gulf of Thailand, and they want to make a railway line to transship all the goods out there and then take it through the Gulf of Thailand. This is the proposal which the Chinese have now given, which circumvents the all the straits, the Malacca Straits, the Sunda Straits, and the Lombok Straits. That how workable it is can't be said, because the amount of trains you need to run is enormous. Because the train चाहे डबल डेकर भी कर लो, वो अपना कंटेनर्स को 20 feet equivalent unit बोलते हैं, TEUs, either 20 feet or 40 feet, but they're all converted for calculation in maritime trade for 20 feet. So it is 20 feet equivalent units, TEU जो बोलते हैं. Train will take about 200. Ships come with 20,000. No. You can imagine handling, but this is the ploy which they throw na, the Chinese, कि भाई हम ये कर देंगे, आपके लिए रेल बना देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. They are very keen because वो उससे थोड़ा नीचे ही उनका अलाइनमेंट होता था करा कैनाल का. So they have Coco Islands of Myanmar on one side, and they have the the Riam port on the other side, and they control that route. So Thailand is also a big question mark today. क्या कर लेगा? मलेशिया चलो गिरता पिरता चल रहा है. Singapore is attempting to stay neutral, but we have to know that 70% of the population is Chinese, and it has gone from father to son. Next कौन आएगा पता नहीं, in the same Chinese family.
एंड उनके पार्टी में लीडर कैन ओनली बी एथनिक चाइनीज, Chinese. और कोई नहीं हो सकता. सो इट्स ओपन टू क्वेश्चन क्या होने वाला है. सो that leaves you with only Indonesia, and I have always held that it is not the centrality of ASEAN which is critical for us in the Indo-Pacific. It is centrality of Indonesia, Indonesia. and we must Correct. cultivate Indonesia, because Indonesia has ports in the Indian Ocean, it has ports in the Pacific. So that is where ASEAN is a big question mark. South Pacific, we have just about started going there. That had always been the influence zone of Australia and New Zealand, and they have looted them. Like the colonials had looted Africa and had continued to loot Africa even after they gave independence. These people were doing the same thing in the South Pacific Islands. And it's no small wonder that they have shifted towards China. They say, यार तुम भी लूट रहे हो, वो भी लूट रहा है, वो तुम लूटते हो, पैसे मेरे जेब में नहीं आते हैं, वो लूटता है, पैसे मेरे जेब में आते हैं. See, the leaders are also not interested in the good, what benefits the people. वो ये बोलता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तुम लूटते हो, मुझे पैसे नहीं देते हो. ये लूट रहा है बट ब्राइब में मेरे को ठोक में पैसे देता है. America has stepped in, India has stepped in. Let us see. This is a big cause for concern for the US, because if अगर चाइना यहाँ पे आ जाता है, अपना एक बेस बना लेता है, it turns Guam. अभी Guam is looking up towards the South China Sea. He'll have to turn and look this side. गुआम के नॉर्थ मारियाना आइलैंड्स में एक और जगह वो बेस बना रहे हैं द अमेरिकन्स. आई वंडर व्हिच डायरेक्शन इट विल लुक एट. देयर वाज वन मोर आइलैंड दे हैड स्पोकन ऑफ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, नॉर्थ ऑफ गुआम. गुआम एंड ऑल Batane is the other side. नॉट बतान, देयर इज अनदर नेम. ये मारियाना आइलैंड्स हैं, तो नॉर्थ मारियाना में दे आर मेकिंग अ बेस. बट that's the issue ना, that if South Pacific में आ गया है तो what will you do? Australia and New Zealand, suddenly they find themselves, even the Anglosphere में भी यूटिलिटी वैल्यू कम हो गया है. ऑकस वगैरह साइन कर दिया है, लेकिन कुछ आया नहीं है अभी तक. थोड़ा बहुत चल रहा है. इट इज नॉट एन अमेरिकन डिजाइन, it is a British design, going to be funded by the Americans. इनका वो न्यूक्लियर सबमरीन का क्या होने वाला है पता नहीं. It was, I think, more a push by the America to keep France out of it. France, by the way, is a resident power both of Indian Ocean and South Pacific. They have islands which they own, which are here, both in Indian Ocean and South Pacific, like Reunion Island near Madagascar. That is French territory. For some reason, the Americans are not keen to permit France to come here. Reasons best known to them. Southern Indian Ocean region, we have a hold at the moment, Mauritius, Seychelles, Madagascar, but China is also pushing it in a big way to get a foothold there in the Southern Indian Ocean littorals. East coast of Africa, the competition is up and about between India and China. This is where the Asia-Africa growth corridor of joint deal of India and Japan is working well. And multi-domain area mein slowly the Africans are shifting towards India, because our Indian companies like Tata, Bharti Airtel have been working there for a long time. I think even Mahindra has come in there. Reliance is there. They have noticed the difference in functioning of our companies and the Chinese companies. When our companies go there, we go with a small group of people. We train the locals. As our infrastructure is getting built up, we train the locals. And then once the infra is ready for the factory or whatever is to be run, like
the your internet services, telecom services are to run, you have the trained manpower, and on you keep training them, you train the managers, you fund them to come to India to various business schools to do MBA and go. So ultimately उनका कहना है कि जब 100 बंदे होते हैं टोटल कंपनी में, तो इंडिया के मुश्किल से 5-7 होते हैं, बाकी सारे हमारे होते हैं। चाइनीज का अदर वे राउंड है कि 100 बंदे होते हैं तो तकरीबन 95 तो उनके होते हैं, 3-4 ही हमारे होते हैं। So they are understanding the difference that if a Indian company comes there, then locals get a lot of jobs. Jobs. Materials are sourced locally. Materials are facilitated and sourced locally if it is available. If it is not available, then you source it from India or any other place. But whatever is available locally, that is sourced from there. So you find the difference, and that is how the first step has been made. All these African Union countries or through African Union are wanting our education establishment to open the campuses there. And the first such campus is same IIT Madras where I am. They have opened the campus and courses have started from 1st of November in Zanzibar, which is part of Tanzania. And I'm sure in the coming months, more and more educational institutions will start opening campuses there, because a lot of African students study in India. Quite a lot of them study in India. So, but East Coast of Africa, like I said, we are competing. चाइना ने छोड़ना नहीं है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को, उसके ऊपर दबा के रखेगा। अभी जैसे हमें मोजाम्बिक के साथ भी हो गया है डील, युगांडा के साथ भी हो गया है। So when you do all these deals, Angola has got a lot of nuclear reserves, by the way. So Uranium. not Angola, Namibia. Sorry, Namibia Namibia. has a lot of That nuclear. actually the entire sub-Saharan belt is like that. Yeah, but Namibia में known resource है ना, yellow cake बहुत जी मिलता है वहाँ पे। नहीं So निजर नमीबिया yeah, Niger ये has पूरा बेल्ट इज लाइक that is दैट the सर Sahel region, which is towards हाँ the द south. एंटायर साहेल रीजन यस Niger तो पूरा bulk of Niger uranium तो was being taken away by the French ना. फ्रेंच Now I think they are going to some other country, Kazakhstan and other places to get it. Now we come to West Asia and North Africa. Again, the IMEC, the I2U2 and the India UAE French deals. These have given you a strong foothold there. So if you are able to roll it out, then that hold China will not be able to compete. So that we have to see how it unfolds. Now with this latest thing, France coming here, the French president coming here and all this happening, it's open to question whether the West Asian countries start looking at France for weapons also. If that happens, then US would have lost a large footprint out there. US bhi nahi chodega. When you're going in there, you're not competing only with China, you're also competing with US. You got to realize that. Even North Africa. नॉर्थ अफ्रीका में भी मतलब आप देख लो, इजिप्ट ही है जो नॉर्थ अफ्रीका का कहेंगे। सूडान में तो वैसी लड़ाई चल रही है उनकी, और नॉर्थ जो बिटवीन दी वो क्या था, रैपिड सपोर्ट फोर्स एंड दी सूडान आर्म्ड फोर्सेस में तो लड़ाई चल रहा है, काफी चल रहा है। एंड उसका कोई खबर न्यूज़ कोई चैनल कवर नहीं करता है, एंड इट इम्पैक्ट्स द ऑयल, बिकॉज ऑयल फ्लोज नहीं आएंगे। साउथ सूडान में काफी ऑयल फील्ड्स हैं, बट ऑल द पाइप्स आर लेड एंड द पोर्ट्स थ्रू व्हिच इट गोस आउट इज थ्रू द Sudanese government, or should I say North Sudan. North Sudan is total chaos. Libya is total chaos. So उस तरफ Algiers, Morocco है, that goes beyond, we are not looking at them. So Israel में you have an issue going on Gaza के साथ. We have supported Israel. We have said we look at two state, but we, like everybody else, have not committed on where are these two states.
इसराइल तो एक बहुत स्टेट है, द सेकंड स्टेट जो है पैलेस्टीन का, वो कहाँ होने वाला है ये अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है किधर होने जी। वाला है। एंड द वे दिस इज मूविंग, खान यूनिस के अंदर भी वो घुस गए हैं, लगता नहीं है गाजा स्ट्रिप में उनका कुछ बचेगा। आई डोंट थिंक गाजा स्ट्रिप विल स्टे देयर। सो वेयर West Bank is not big enough, and I don't think the Israelis will permit after what happened in October 7th. And वो खुले टीवी में गधा, उनका जो हेड है, बोल रहा है कि भाई हम अक्टूबर 7th में जैसे किया था हम तो बार बार करेंगे टिल द annihilation of Israel, and then you expect कि वेस्ट बैंक में वो परमिट करेगा आपको? So where do the Palestinians go? Where the second state happens is actually in thin air as it stands at present. Central Asia and Caucasus में Azerbaijan and Armenia, we have stood with Armenia. Azerbaijan doesn't know now what to do, किसके साथ जाए. They were with Russians, Turkey. They thought कि सबका वहाँ पे लड़ाई हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रहा है. The way the Russians have gone in and taken over those Donbass areas, हम भी कर लेते हैं, but that's where it's come to a standstill. क्या होगा? अब वो रो रहे हैं कि भाई हमने हथियार आर्मेनिया को दे दिया. अरे भाई, अगर तुम हथियार ले रहे हो रशिया से तो और टर्की से, तो मैं आर्मेनिया को क्यों ना दूं? तो मैं दूंगा. ये तो नहीं है कि तुम हथियार ले सकते हो, दूसरा हथियार नहीं ले सकता. ले सकता. तो जॉर्जिया वेयर इट इज. सो काउकासस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क टुडे कि क्या होगा वहां. एंड let's not forget Azerbaijan does control a lot of oil. Central Asia today is relatively stable, but they are more worried about Russia after Russia has gone into Ukraine. But for the first time under Uzbekistan, at least Uzbekistan ka Mirzoyev has made an outreach to get the five nations together. इसके पहले the five nations were looking at themselves independently. So when you look at it also, Kazakhstan is one which has openly gone against the Russians, and बाकी Turkmenistan तो they've always been a very closed state and it's quite badly off. Only thing he has is gas, but they don't open anything. One dictator gone and his next dictator son has come in. फर्क कोई नहीं पड़ता उनको. Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan relatively are stable at the moment. Afghanistan has promised the Taliban that they will not interfere in their countries. But all these countries, especially Tajikistan, has the Russian border guards along with the Tajik border guards. And the Chinese have two bases which they have made there for joint patrolling along the Wakhan corridor, just north of the Wakhan corridor. They have two Tajikistan. bases, yeah, in Tajikistan. So that's a cause for concern, because whatever OSINT से तुम फोटो देखते हो, I don't see, while under the garb of joint patrolling, there are only the Chinese out there. Even the Russian bodyguards are not, border guards are not there. May I ask something, sir? Yeah. May I ask something at this point? Is that region kind of higher up in altitude? It's quite high up and very sparsely populated. That's the area generally, Gorno-Badakhshan. Gorno is mountainous in Russian. So that is the mountainous area. Pamir Knot wala area pura hai wo. So the lower portion of that, areas where the Chinese have put in, nobody lives there. And even the Wakhan corridor is very, very, very sparsely populated. And surprisingly, Wakhan corridor has Kyrgyz people. वो कहाँ से पहुंचे अभी तक कहीं, काफी खोजा मैं जब वहां पे था, वो मिला नहीं कहाँ से. Then we come to Russia. Russia has always been a friend, but of late he is leaning towards not only China but also Pakistan.
because marta kya na karta, when he is cut off from everybody, he has shifted to the Chinese. But I'm surprised because China doesn't buy as much oil from them as much as we do. He doesn't sell as much crude to Chinese as much as he gives to us. Uh, Going leaning towards Pakistan is again a cause for concern. कि why is he leaning towards Pakistan? Though saying that कि नहीं हमारे बात करने से we might arrive at something and they might not do something. Don't they learn the lesson from the Americans where the Pakistanis have running with the hares and hunting with the hounds? So they need to be careful, Russians. But Russia has always been there for us whenever we needed. And despite a little delay, the S-400 is there on the line. It's coming. No, Third they've वाला भी actually आ गया. shown. अरे नहीं सर, हमारे मिलिट्री अटैचे को ले जाके फैक्ट्री फूट्री दिखा चुका है वो. Yeah. वो तो इन्हें इट्स पूरा नॉट है. लाइक So दी that's what I'm अमेरिकन्स की saying, भाई that जब आएगा ये तो फैक्ट्री all ले said जाके and दिखा done, दिया उसने, भाई ये बन रहे हैं आपके. in a Russia, the two countries which have always stood by us are Russia and Israel. Like, I was there in Dras sector. We were controlling all the convoys also. We were providing the firm base for the attacks on Tololing and Tiger Hill. हालांकि armored corps का हूँ, but 16 cavalry which had gone there. I was the 2IC. We were providing the firm base for the attacks on Tololing and Tiger Hill, and we had secured the Pandras Matayan Ridge. We Yeah. controlled the movement across the Zojila Pass. वहां पे एक जगह है घुमरी जहां पे सारा कॉन्वॉय खड़ा होता था. We have seen the amount of Israeli ammunition and everything, whatever came for the apna Bofors guns, the way the Air Force got the spike to put it on to convert your dumb bombs into precision bombs. No questions asked. Everything just came on one call. Same is with the case with the Russians. So these two have always been there for you. They have held your back up. So that's why I've said that despite this, we have had good relations with the Russians. Amongst all these, I would say Japan, South Korea are leaning towards you. They are keen to have a defense agreement with us. And that speaks volumes. And USA needs to be worried about it. That you have defense agreement, they don't have trust on you. They are looking at defense agreement with India. ASEAN में Indonesia is the key and we have good relations with Indonesia. South Pacific, we have just started. Just ऑस्ट्रेलिया start. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समझ गया, न्यूजीलैंड बेचारा चुपचाप से बैठा हुआ है बिकॉज हिज रेलेवेंस ओवरऑल इज क्वेश्चन मार्क. सदर्न मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, बट चाइना इज ऑल्सो देयर, सो यू आर कंपीटिंग देयर. ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यू हैव डेवलप्ड वेरी गुड रिलेशंस अक्रॉस द होल लेंथ, but China is competing with you there. West Asia, it's not just China, even US is competing with you. North Africa, Egypt is the place. Central Asia has actually very good relations with you. So, but China ka काफी hold है because quite a lot of countries are in deep debt, especially Tajikistan, Kyrgyzstan are in deep debt with the Chinese. And Chinese are looking at, Russians have not given them a pipeline. So they are pushing for Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan to give them oil and pushing Turkmenistan to give gas. Will Yes. it come through? काफी टाइम से चल रहा है. Will it come through? I don't know. Caucasus, I think we'll be able to manage Azerbaijan and we'll be able to get Armenia to अच्छा relations है. Maybe if we step up our diplomacy, we'll be able to get some working relationship going through, because there is Nagorno-Karabakh, which is an enclave, very big enclave of Armenians in Azerbaijan. Azerbaijan. Similarly, Azerbaijan has an enclave in Armenia. Is there a way forward that you exchange both the enclaves? Maybe Armenians may want to keep certain portion of Nagorno-Karabakh because their enclave is
much bigger, almost 2 to 3 times bigger than what is there. But like we have done with Bangladesh, where we exchange the enclaves and मामला सुलझ गया. तो there is a way forward, but extended neighborhood, some level of influence we have, but there are places where not only China, even US is competing with. So you got to be careful about that. Anything you want to add or ask? So only one Otherwise, thing, yeah, one major thing. It is हाँ, about the gas and the oil. इसके yeah, अंदर दो चीजें हैं. One of the biggest things that we see is that the Russians are now wanting to kind of come towards you a little more closer. क्योंकि आपने एक जो थोड़ा सा डंडा मारा था इनको, हमने yeah, डिस्कस भी किया था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर, टाइम मिले तो ये हफ्ते के अंदर सर एक छोटा सा आधा घंटे का विल डू अ रिकॉर्डेड सेशन इफ यू डोंट माइंड ऑन इंडिया रशिया. ये okay. थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमको समझना, बिकॉज कई लोग ना रशिया को कंपेयर करते हैं यूएसए के साथ. एंड नहीं 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 ये नहीं, यू नो यूएसए का ये भरोसा नहीं हो नहीं कर सकता. सकते कब किस तरफ करवट बदल देगा. रशिया हैज ऑलवेज बीन विद यू राइट थ्रू द 60s 50s 60s. आपके पूरे स्टील प्लांट्स जो लगे हैं, एटलीस्ट एमपी एंड एमपी के अंदर, आई हैव सीन माय डैड, जितने भी पावर लाइंस और सारा कुछ आपका लगा है, द रशियंस हैड कम, एंड इन सर्टेन प्लेसेस इवन दीज एरियाज द जर्मन्स हैड कम. और कोई नहीं आया था. रशिया had helped you in a big way at that time. Soviet Union at that time. That is how I had a booklet dad used to keep to translate English to Russian and English to German that I still have. And 50s में लिया हुआ था. So Russia has had your back for a long time. या दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड सर. Yeah, next. So now the old deep state footprint. The US and the balance Anglosphere is because US is also the Anglosphere. US, the CIA and the State Department is riven with the old deep state footprints. भरे हुए हैं. Old deep state, when I say, these are the apologists of extreme leftists and Islamists. भरे हुए हैं. कनाडा में देख लो, यूके में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, एंड टू सम एक्सटेंट न्यूजीलैंड में, क्योंकि उतने वो आई नहीं है इस्लामिस्ट, बट ऑस्ट्रेलिया में आपके खोटिस्तानीज हैं. सो यू कैन सी दैट देयर द वे इट इज. वेस्टर्न यूरोप इज रिवन विद इट. भरे हुए हैं वेस्टर्न यूरोप में पूरा, बिकॉज वेस्टर्न यूरोप वाज अंडर द अम्ब्रेला, अपने यूएस के अम्ब्रेला के नीचे था. तो उनके पास और कोई चारा नहीं था. उन्हीं के साथ इस पॉलिसी में चलते थे. जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट हैं, ये हैं डीप स्टेट के करता धरता, एंड ऑफ कोर्स योर खोटिस्तानीज. हमारे खुद के अंदर इंटरनल शिज्म्स इतने हैं, भरे हुए हैं इन सब में. और भारत के अंदर मीडिया, योर थिंक टैंक्स, योर स्कॉलर्स, योर यूनिवर्सिटी, न्यूज़पेपर्स, सब जगह भरे हुए हैं. हम भी देखते हैं, अब तो सब पहचान में आ जाते हैं कौन है ये लोग, क्योंकि इनकी वैल्यू अभी खत्म हो गई है. तो अभी खुल के निकल के आ रहे हैं. अंदर है, हम तो जानते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू चैलेंज यू, क्योंकि अब न्यू ऑर्डर में इनकी जरूरत नहीं है. इतने दशक इन्होंने आपके देश के अंदर ही नहीं, पूरे ग्लोब को कंट्रोल किया था. इतने जल्दी वो छोड़ने वाले नहीं हैं. वो आप देख रहे हो ना, निज्जर, पन्नू, क्या क्या निकल के आ रहा है. आपके अगेंस्ट आर्टिकल्स छपने लगते हैं. आपके वो भी हुए थे, रेसलिंग फेडरेशन वाला भी कितने महीने चला था. और इलेक्शंस में क्या हुआ, उनके बंदे हार गए. अब जब हार गए तो रो रहे हो कि नहीं 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 नहीं, अरे जितना तुमने बोला था सारा कुछ किया. तो इस तरह से कई कुछ आपको निकल के आएंगे, देखेंगे. छोटे 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 आपके पार्लियामेंट के अंदर वो भाग गए कुछ ना कुछ करके. उनको पता था वेल ऑफ द हाउस में आएंगे, फेंक दिए जाएंगे, फेंक देंगे. कहते हैं इट्स मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. खुद डेमोक्रेसी का मर्डर करते हो, डिबेट करने को तैयार नहीं हो. सो यू विल फाइंड ऑल दीज
small things keeping on happening to divert attention from the larger issue, to try to show Bharat in a poor light. Hmm. Okay, I will not say existing system, I would say Bharat in a poor light, to show कि भाई इंडिया या हिंदुस्तान है वो बेहतर है, भारत जो उभर के आ रहा है वो ठीक नहीं है. ठीक है. So what can we do? Way ahead. Next. तो ये way ahead, let's see what we can do. Next slide. Some thoughts है. बार बार मैं कहता हूं हमें भारत का नैरेटिव बनाना है. नैरेटिव या नैरेटिव्स बनाइए, तभी आप उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करना शुरू कर सकते हैं. अदरवाइज यू आर ऑलवेज रिएक्टिंग. लेट देम अदर साइड रिएक्ट ना. यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव तब बनोगे जब अपना नैरेटिव आप तैयार करो और उन्हीं का स्ट्रैटेजी यूज करो, टूल किट बनाओ और शुरू हो जाओ. वो टूल किट यूज कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते यार. हम पॉजिटिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी के लिए यूज कर रहा है. एंड फॉर दैट यू हैव टू एंश्योर इंटरनल स्टेबिलिटी रूथलेसली. छोड़ना नहीं है किसी को. effective diplomacy, yes, but high time we started adding तुष्णिम युद्ध. ये कूटनीति का अर्थशास्त्र में दिया हुआ है कि दूसरे देशों के आप जो आपके ऊपर इफेक्ट करता है आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा. उसको आंख मीच के नहीं बैठ सकते. आप राइज कर रहे हैं, आपका एक स्टेटस आ गया है, यू हैव टू डिफेंड दैट स्टेटस. उस स्टेटस का डिफेंस जो जगह है वहां बैठ के नहीं कर सकते हो. आपको बाहर का इलाका अपना इन्फ्लुएंस कंट्रोल करके रखना है. तो इमीडिएट नेबरहुड मैनेज करना है. चाइना को स्पेस जहां तक हो सके, चाइना और डीप स्टेट को स्पेस नहीं देना है. आसान नहीं है बट नामुमकिन भी नहीं है. उनके इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है. एक्सटेंडेड नेबरहुड में मेरा कहना है और फुटप्रिंट बढ़ाइए. अभी जैसे आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला है, और खोलो. आपके कंपनियों को मदद करो और उनके देशों में जाके अपना बिजनेस बनाने के लिए. तो उससे क्या होता है, दोनों चाइना और डीप स्टेट में टर्बुलेंस आ जाता है. डीप स्टेट कंट्रोल करता था लाइक अ कॉलोनियल पावर ऑन अफ्रीका. आपके जब आप जाते हैं, देयर इज इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी इन दैट कंट्री. पीपल गेट जॉब्स. आदमी को जब काम मिलने लगता है, सब कुछ ठीक चलने लगता है, तो इस रास्ते में नहीं जाता है. तो ये इमीडिएट नहीं है बट यू हैव टू इंक्रीज. इस आने वाले दशक में यू हैव टू इंक्रीज योर फुटप्रिंट्स आउट देयर टू गेट दीज पीपल आउट ऑफ द होल्ड ऑफ द चाइनीज एंड द डीप स्टेट. ये ओल्ड डीप स्टेट अगले एक दशक के अंदर इतना जल्दी जाएगा नहीं. काफी टर्बुलेंस होगा, काफी टर्बुलेंस होगा. तो उसको आप वहां जाने लगोगे तो टर्बुलेंस उसको होगा, वो ज्यादा तड़पेगा. और जैसे आदि भी अपने टॉक्स में बोलता है, हेज योर बेट्स. किसी एक के ऊपर नहीं, हेज योर बेट्स इफेक्टिवली एंड इंटेलिजेंटली. और मेरे को ये सबसे करने के लिए अच्छा लगता ये है करने हुक डाल के रखो. हाँ बिल्कुल, ये करने के लिए जो मैं अपने टॉक्स में बोलता रहता हूँ, नेट असेसमेंट करो हर चीज के लिए. तो यू विल अराइव एट भारत. व्हाट इज योर कोर स्ट्रेटजी, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेटजी, एंड जो आदि बोलता है योर हेजिंग स्ट्रेटजी. वहां से निकल के आएगा. ऐसे ही नहीं हो जाता कि अच्छा ऐसा कर ले ऐसा कर ले. ना जी, सिस्टमैटिक वे में जाइए. देयर इज अ नेट असेसमेंट है. जो आईआर करते हैं वो सब समझते हैं कि ये नेट असेसमेंट क्या है. जो नहीं समझते हैं, गो ऑन टू द गूगल, डू नेट असेसमेंट का दीजिए. आपको बेसिक्स पूरा समझाएगा किस तरह से करना होता है नेट असेसमेंट. वो करने के बाद आपको मिल जाएगा कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है. और पीरियोडिसिटी डाल दो कि हर 4-5 साल के बाद मैं दोबारा नेट असेसमेंट करके पता करूंगा.
अगर 5वें साल में नेट असेसमेंट आपका कंप्लीट होना है, मतलब एज अ नेशन तीसरे साल से आपको नेट असेसमेंट शुरू करना है, कंप्लीट करने में टाइम लगता है. So every third year you restart a net assessment, arrive at the fifth year जहाँ पे विंडो खत्म होता है शॉर्ट टर्म का, वहां पे फिर आप बैठ के देखो कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था कुछ अचीव करने के लिए, जो कोर स्ट्रैटेजी था, बेसिक स्ट्रैटेजी था, हेजिंग स्ट्रैटेजी था, ठीक चल रहा है. क्योंकि जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इज वेरी फ्लूइड, चेंज हो गया है. क्या मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, किस तरह से मॉडिफाई करना है, वो करके फिर आप आगे चलिए. आंख मीच के आज कर लिया तो आप नहीं सोचो कि 10-20 साल वो चलेगा, ना जी, मैक्स 5 साल चलेगा. तो उसके पहले आपको दोबारा से बार बार वो नेट असेसमेंट करके आगे जाना. ठीक है. तो ये कमिंग ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग ईयर. लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. यू विल सी बहुत सारे अटेम्प्ट्स बाय द डीप स्टेट टू ट्राई एंड डिक्राई भारत, कि भारत बेकार है, भारत ये है, भारत वो है, रिवर्ट टू इंडिया, रिवर्ट टू हिंदुस्तान. दैट पुश विल कम. There will be lot of schisms will be created, lot of friction they will attempt, lot of internal instability they will try to do. नक्सल्स तो हैं ही हैं, आइसिस, इस्लामिस्ट, और लेबर भी है आपका जो लेफ्टिस्ट है, काफी हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर लेफ्टिस्ट. तो आपको हिलाने की कोशिश करेगा, बिकॉज इफ योर लेबर गोज ऑन स्ट्राइक योर इकोनॉमी स्टॉल्स. Most importantly. Right. So that is why I said ensure internal stability ruthlessly. जो खड़ा हो Ruthless. टूट रहा है करे, सीधा करना है उसको. तो सीधा. एब्सोल्युटली करेक्ट सर. So ये phase है where you have to be ruthless on internal stability. Yeah. These were some of my thoughts. Now, whatever questions, whatever else you have, others have, please shoot. फैंटास्टिक सर. सबसे पहले तो सवाल ले लेते हैं काफी सारे. यार गाइस, छोड़ दो यार. लेट्स प्लीज काम डाउन. डोंट फाइट अबाउट some guy who's making some comments about me. I don't care. Okay. There are so many comments running around. Some guys made some comment. I don't care, yaar. Let them be. Let them be in their own this thing. I'm just telling you guys मतलब one thing. याद ठीक रख है, लो कि आदि रखो. ने उनके दुखती रग पे हाथ रख दिया. हाथ रखा है कहीं ना कहीं. यार छोड़ दो यार. आई एम नॉट अगेंस्ट और फॉर एनीबडी. मेरा एक ही एजेंडा है, वो है भारत. तिरंगा देख रहे हो ना इधर पे? देख रहे हो ना भारत. तिरंगा? दिस इज माय एजेंडा. आई डोंट गिव अ about anybody else. So calm down. Please calm down. Let's calm down. And you know, Gurjot, there's no need for you to calm down. ठीक? Please relax. Okay, I don't want people picking up fights over here because of some guy who said something somewhere. So please relax. Let's focus on what sir said. Because जो सर ने चीजें बताई हैं, मैं एक स्लाइड पे सर को वापस लेके जाना चाहता हूँ सर, विद योर परमिशन. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. मेरा सवाल एक ही है एंड मैं ये खुला रखूंगा क्योंकि काफी सारे सवाल इसके ऊपर आते हैं. ठीक है. मेन थिंग मेन सर, you have shown us this reach of Bharat. Not just the reach of Bharat. If you look at the map which I have created, which is the country which is central? India. That Bharat. is what. And ये चीज सबको याद रखनी है. Right? This is just a statement that I wanted to make, जो सर ने हमको दिखाया है. ठीक है. And remember this, that the Bharat's position going forward in the world today is going to be critical. IMF आपको जितनी मर्जी टांग खींच ले, बट वो आपको ये भी बोल रहा है कि साहब 16% आप दे रहे हो दुनिया को. ठीक है, वो आपकी टांग इसलिए खींच रहा है क्योंकि 16% दे रहा है, खींच उसको नीचे. ठीक है. पहले 16% का आता है, नो नो इंडिया इज डूइंग ग्रेट. उसके बाद जब वो गंदे पुराने डर्टी डीप स्टेट को पता चलता है कि आईएमएफ ने ऐसे डायलॉग मारा है, ओए इधर आ, ठक, उसके कान के नीचे थप्पड़ मारता है, बोलता है इधर आ, जल्दी दोबारा डाल कि इंडिया कुछ गड़बड़ कर रहा है. तो फिर दोबारा आता है कि नहीं नहीं, इंडिया इज डूइंग करेंसी मैनिपुलेशन. I mean, this is childishness, and I keep laughing at this, and that's why we talk about this. कि यार, we are much beyond this thing.
हम लोग को थोड़ा फोकस करना है ऑन हाउ टू ग्रो आवर कंट्री, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखो, लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन सर। इसमें एक ही फाइनल स्टेटमेंट बताता हूं कि जी हम जहां पे पहुंचे हैं आज, भारत जहां है, आपने अच्छे पावर बनने का फाउंडेशन बना दिया। अब आपने इसको सिक्योर रखते हुए, अपने आप को सिक्योर रखते हुए अब घर बनाना है इसके ऊपर। ये समझ लो, कई लोग सोच रहे हैं इतना हो गया हम पावर हो गए, ना जी, आपने फाउंडेशन बनाया है, अभी फाउंडेशन बनाया। अब आपने दीवार खड़ी करनी है, सब तरफ छत लगाना है, सब करना है, घर बनाना है उसके ऊपर। वो क्योंकि आपने फाउंडेशन ही बनाया है, अभी सबको तड़प हो गई है, तो जो जो जिन जिन को अखरता है वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। प्लीज रिमेंबर, कोई भाईचारा नहीं होता है, सारा रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होता है। आज मैं 4 ट्रिलियन में हूं, आईएमएफ कहता है वर्ल्ड के जीडीपी का पाई 100 ट्रिलियन है। अगर वो कहता है कि 2040 तक मैं 10 या 12 ट्रिलियन तक पहुंच रहा हूं, तो किसी और के पाई का साइज छोटा हो रहा है, वो एक्सेप्ट करेगा? अगर कोई बड़ा देश था जिसका पाई अब छोटा हो रहा है, जिसके ऊपर आपका पाई बड़ा हो रहा है, पाई पीस का साइज, तो आपके पीछे पड़ेगा। तो जब ये सब आपके ऊपर बैठ के असेसमेंट करते हैं, नेट असेसमेंट कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है, आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, तो वो क्या काम करेगा जब नेट असेसमेंट करता है? आपके वीकनेसेस को टारगेट करेगा, आपके थ्रेट्स को बढ़ाएगा, आपके स्ट्रेंथ को रोकने की कोशिश करेगा और आपके अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ताकि आप बढ़ नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें नेट असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं हमें पता है कि किस तरह से हमारे के ऊपर ये टारगेट करेंगे, तो हम उसके आंसर्स हमारे पास होंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके कोर, बेसिक और हेजिंग स्ट्रेटजीज आते हैं। जी, तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं मैं कि नेट असेसमेंट। that's an amazing आपने it'll take some time to kind of, it's आपने जो बोला है, it's a very easy thing to understand, but इसको internalize करने में थोड़ा टाइम लगेगा। It's something तो which हमें needs to be खुश नहीं thought होना about. चाहिए कि वो कह रहे हैं कि आप ये कर रहे हो, पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं वो उस पे ध्यान दें। Most importantly, and इसको internalize करने में थोड़ा सा we'll have to understand. Guys, most importantly, let's like the video. We've got 1800 plus people watching us. We've crossed an hour and 10 minutes, and we'll take it for another 23 minutes, making it an hour and a half. Most importantly, guys, like the video, subscribe to the channel. Let me just say this very clearly: the growth that you're seeing in this channel is all because of you. ठीक है, आप लोग encourage करते हो, आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, तभी मन करता है हमको भी आगे कुछ करने का। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो आई care about what my care about is more you guys who are here every day. There are times when you guys come, मैं 5 मिनट पहले आप लोगों को बताता हूँ, and you guys are there in, at least 1,000 people are there. So please, the core value of this channel are you guys. So thank you so much for all the help and support, and I look forward for more. Please like, subscribe, and मेरी तरफ contribute करने के लिए you can use the QR code or PayPal, which is there in the description, or you can use the super stickers or super chats options. Thank you so much. Let's see. Okay, सबसे पहले जी, thank you. Okay, Porichil वो चल Viram. भी राम। I'm sorry if I'm mispronouncing your name. My apologies, but thank you so much for your contribution. I don't want to बोलेगा यार, एक तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ऊपर से मेरा नाम बर्बाद कर दिया इन्होंने। सॉरी। ठीक है, क्रिएटिव मास्टर, he says thank you so much. Firstly, he says, why do our army not use armored vehicles in JNK? 5 to 6 soldiers died in age-old Maruti gypsies. SOP is not followed properly, sir. आई वोंट कमेंट ऑन दिस, बिकॉज एम्बुश कभी भी कहीं भी हो सकता है, चाहे आप एसओपीज फॉलो कर लो मत करो, एम्बुश कैन हैपन फ्रॉम एनीवेयर। दोज आर थिक जंगल्स where they were going, you're going through thick jungles, and not just one, two, three of them, if I've read my report correctly, very thick jungles. जी I have operated in those kind of areas.
आपको 5 गज दूर नजर नहीं आएगा. The undergrowth is so thick. Okay. You have to, if you have to go through that area, आपको अपना वो machete धा लेके काट काट के चलना पड़ता है. It's very thick. So आपको दिखता नहीं. So to say SOPs are not followed, it's very easy to say. People are very well trained here. They know what they are doing. So हो गया यार. That's apart from part of that it. apart from that यार, armored piercing जो armored vehicles होती हैं, they can also be pierced, by the way. Yeah. It's not that they're impervious to bullet fire or anything like that. You got armor piercing आने bullets. अब आने शुरू हुए हैं. To percolate down to every unit and every place, it takes time यार. Your Takes time. army is huge. And इतना ज्यादा भी वो कैपेसिटी नहीं है आपके इंडस्ट्री में कि एक ही झड़प में पूरे आर्मी में स्प्रेड हो जाए. Adinath ji, thank you so much for becoming a member. Ram Priya ji, thank you so much for your contribution. Alpha Max, thank you so much. Firstly, he says U.S. government agency BARDA. I'm not sure what the full form has been actively preparing for upcoming pandemic, floating millions of dollars of contract for medical preparedness, supply chain, cold storage shortages. Any concerns? कोल्ड स्टोरेज तो उसके लिए चाहिए ना, उसको वैक्सीन के लिए. Vaccines. Hmm. His vaccine, like the one Pfizer है, it needs to be at -70 degrees. Moderna also needs to be about -16, 18 जो फ्रिज में हो जाता है. तो उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए. वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यार. बहुत हमारा तो फटाफट हो जाता है यार. तो अपकमिंग पैंडेमिक तो अभी चाइना में है, तो ऑलरेडी हमारा शुरू हो गया है. क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसने करना है. फाइजर इज अ यूजलेस. अभी तक तो जितना अब निकल के आ गया, फाइजर इज अ यूजलेस. इनफैक्ट फॉर सर्टेन पीपल इट इज अ थ्रेट टू देयर ओन लाइफ. चाइनीज वैक्सीन तो पैथेटिक है. तो करने दो यार. वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग. ऐसा नहीं कि हमारा गवर्नमेंट नहीं करता. वी ऑलरेडी हैड 2-3 State levels भी हो गई है सर. State level meetings are happening. I इवन know the state नेशनल I am लेवल in. पे ऑलरेडी मैसेजेस चले गए. स्टेट लेवल पे ऑलरेडी हो गया है. कर्नाटका, केरला. हमने आई हैव ऑलरेडी बॉट माय सेट ऑफ मास्क. घर से निकल के जाना है तो हम तो मास्क पहन के जा रहे हैं. So, जो प्रोटेक्शन पहले था वो कर लो. See, the problem with the US population is their what we call that immunity levels are not that high. Our physiologically our immunity levels are very high. जो भी डेली अपने खाने में टर्मरिक, जिंजर, स्पाइसेस ये सब डालते हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा हाई है इन चीजों. सो ठीक है. दे आर ऑल्सो वरीड. तो दैट्स ओके. They are worried because they have much more people who have close contact with the Chinese. There are a whole lot of Chinese students who travel between China and come back to the USA. So their threat and worry for the spread is much more than us. हमारे वो थोड़े बहुत बिजनेसमैन ही हैं जो जाके आते हैं. बाकी तो कौन जाता है अदर देन MEA के बंदे जो ट्रैवल करते हैं. और कोई ट्रैवल नहीं करता. बहुत कम है. स्टूडेंट्स अभी तो काफ़ी कम हो गए, क्योंकि उसके बाद तो उसने खोला भी नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर द लॉकडाउन. तो दे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स देयर एट द मोमेंट एज फार एज आई कैन रिकलेक्ट. जी. Shubham Agrawal ji, thank you so much, sir. Venezuela and Colombia conflict. Colombia नहीं, Guyana conflict. The impact on us. They have a border issue. Yeah. They have a And border issue. Guyana से आपके अच्छे relations हैं. इवन वेनेजुएला अभी आप ऑयल वहां से ले रहे हो ना. जी. You're getting oil from them. JP, thank you so much. He says, Adi, congrats, 125K. Pranam, military officers on Dev Talks. Thank you so much, brother. And I'll pass your regards to everyone. Abhishek Gautam ji, thank you so much. My humble pranam to the general. Thank you, Abhishek. Naga Prasham ji, thank you so much. How India can be good in narrative and storytelling? By just telling the truth. Yeah. See, narrative is you take a fact and then you build your story around that. And as the situations change around that fact, you have to keep telling your narrative. We have never been good at influence operations. We need to build up that capacity, because
What these old deep state do is play with the narratives. अब वो चोरी पकड़ी जा रही है. You have risen so much and he puts you on hunger index below Afghanistan, जिसको आप खाना खिला रहे हो, and he puts you on hunger index. So this is where your narrative, who are you, what are you wanting to do, कोई भी इशू होता है उसके ऊपर आपका narrative out हो जाना चाहिए in the social media and everywhere, that this is what it is. Any incident which happens, your narrative has to be out. Don't wait for the others to do it. Narrative building. And this is where Hmm. IB also comes very important, and these state police CID also comes in very important, because they have to look at these also, that people inimical to Bharat, what kind of narratives are they playing and would be likely to play. तो उसके पहले हमारा narrative आ जाना चाहिए. So then let them be reactive to say कि नहीं नहीं ये जो बोल रहा है ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये झूठ है. That is what I'm saying. That is there, sir. यार आज क्या हो रहा है? Pretty okay. Sorry, but the questions are really just popping in, popping out from my screen. That's why I'm just keeping my tab here so that I can read and find out. Yeah, okay. Uh, okay, Ming Wu, our friend from China, says, I'm having difficulty in understanding what our government intends in Afghanistan. It is not going to be easy. Hello, all. Hello, Ming. Yes, it's not going to be easy. You're dealing with the Taliban, which is biting the hand which had supported it for so many years. And they're saying that they treated us badly. So it's biting back. Pakistan, which sought, you remember Imran Khan's famous statement that they have broken the shackles of colonialism. What happened? They thought that they had achieved strategic depth, but now you suddenly find that Afghanistan is getting strategic depth up to the Indus River. So Yeah, handling them is very difficult. It's not going to be easy. I can understand. But your government has a lot of investments which have been done in the mines, the copper mines and other gold mines. So getting it out via Wakhan corridor, which is what I think your government plans, because they, on the Karakoram highway, they have already had a branch of towards the Wakajir Pass, which is the pass from Wakhan corridor which comes into Xinjiang. They've already created the complete infrastructure, warehouses, mobile and telecom connectivity, electricity, everything has been done, which is very clear that they are very keen to uh, come into Afghanistan via the Wakhan corridor. It's not going to be yeah, easy. It's not going to be easy because upper Afghanistan is where, to some extent, the northern, whatever remnants of the Northern Alliance are there, are still there. true, sir. See so many news of NIA raids, scary stuff. Although glad our counterintelligence are working. I Yeah, always say yeah. this. I always say this. Remember that your people are working. That's why you're hearing stuff. Suddenly, आपको जब सुनना बंद हो जाए ना कुछ, that's the time you get scared. कि भाई ये क्या हो रहा है? Either everything is super clean and there are no anti-Bharat enemies. That's a big problem. Sir Batraji says, General sir, I fear more interference in our internal matters by State Department and increased attacks on military in JNK. Does a government has a game planned for it? Jagmeet Batra, I am quite sanguine that our government has game planned it, and they know. They know everybody in the State Department who is where. कौन ओल्ड डीप स्टेट के साथ है और थोड़े बहुत जो नए हैं कौन नए डीप स्टेट के साथ है. दे नो दैट. तो ये तो मालूम है कि होगा. आई एम नॉट वरीड जस्ट अबाउट internal matters by the State Department or just in JNK such strife. I am more worried about strife, similar sort of strife within India, India. rest of Yeah. Bharat. Sorry, guys, I'm just looking down and up because for the past 10 minutes, for some reason, I can. I mean, I'm just trying to see because there are certain comments I wanted to take as questions, they suddenly went missing. So I'll probably have to read one or two things from the this thing without putting the question up. One are
Chinese friends Hao Hui had said, is there a possibility that Russia, China, India, along with Saudi, Iran, with some others, you're basically talking about that BRICS thing, uh, with some others having unsigned, unspoken agreement to challenge the current status quo of the world? No, India is not with China on that, because China is looking at having a new world with Chinese characteristics. So even Russia is not on board with that. The Russia-China relationship at the moment is transactional. China is looking at its own dream, which is China controls everything. So I don't think any government would be with them. Iran also is with China only because today, with all the sanctions, it is only China which is doing anything with Iran. So Iran is with them. So I don't think so. I saw a video that China is doing some nuclear test in Xinjiang. Yeah. No, they are preparing. That's what Preparing Ausent for it. के report में आया है. Lopnor, which is their old place, they are digging very deep uh, trenches out there, deep holes, quite wide, which is akin to what when you do deep nuclear tests, so that the fallout stays inside. And there are 2 3 of them out there, and the digging, they've laid out everything what is laid out. So yes, at some point in time, are they doing it? Because they're, please remember, most of their nuclear warheads which they had started off has started going now Bad. defunct. Yeah. So you have to firstly dispose them off, and you need to have new ones. They are shifting from uranium to plutonium. So they couldn't be damned about NPT and other things. They want to explode. टेस्ट बैन ट्रीटी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ ही हैज साइंड तो कर लेगा. Adinaji, thank you so much. He says, so France is a pioneer for collective European defense alliance, which is a counter to NATO. I guess they are aiming at complete autonomy from the USA. आदिनाथ जी सही पकड़े. आई वॉज अटेंडिंग दी, कौन सा कॉन्फ्रेंस होता है, शैंग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर 2015. Okay, as part of the Indian delegation, the European Parliament's rep dealing with defense, she had come there, Italian lady, and she openly said that if the countries ask, European Union is ready to send forces, army, navy, air force under European Union flag and not NATO flag. NATO flag. By the way, even in the task force, Aden task force, which is there for piracy, I think 2 ships they have placed there which runs under EU flag and not NATO flag. So this was the push. Even Angela Merkel had made a statement when Trump had come there and wanted everybody to increase their defense spending to 2%. They had all cut it down drastically. Angela Merkel openly questioned that if you are responsible as NATO for defense of Europe, why do you want us to spend 2%? If I am going to spend 2% equivalent to you, that I might as well do it under my flag or EU's flag. Why should I be under NATO flag under you? This is open, right? Live press conference में बहस हो रही है उनकी. इतना गुस्सा हो गया था, he never mentioned that, I think Article 5, that if they are attacked, I will come. He didn't mention it to the old EU countries. The new EU countries, it was in Poland that he made that statement, and that was not lost on. And that was when ये तूर पकड़ा था. But यूक्रेन वॉर ने सब कुछ कुंडा कर दिया है. अब तो कुछ बचा ही नहीं उनके पास. I think one of the reasons with Ukraine war was also this only. I feel that the Americans had planned that EU was becoming too big for its boots. So retain hold, यूक्रेन की लड़ाई करवा लो, हो जाएगा. You push reflexive control, you push Russia so much towards the corner, he'll attack, he attacked. Rest, as they say, is history. EU going independent तो अभी कोई बात ही नहीं करता. Nobody talks about it. Abhishek Gautamji, thank you so much. General sir, where do you see Nepal heading? See, Nepal, like I said, Gautamji, is on a cusp.
At the moment, it is with you and US. Okay, because of the fallout between Prachand and Oli. How did they win the elections? The Chinese, पहले भी they had fallen out. Chinese ने उनकी सुलह कराई थी and they won the elections. अभी क्या चाइनीज दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेंगे? आपको वो रोकना है. That is where your diplomacy and your तुष्णिम युद्ध comes in. कैसे रोकोगे उसको? So you have, I'm sure people must in power and decision making would be talking about that. This is my assessment. आपको करना पड़ेगा, उन दोनों को अलग रखना पड़ेगा. जब तक वो अलग है, नेपाल आपके साथ है. अगर जुड़ गए, they'll go into Chinese पाला. बट एक चीज है सर इसके अंदर, मेरे को व्हेनेवर आई डील विद द नेबरहुड, मेरे को एक चीज दिखती है, व्हिच इज समथिंग आपने ही सिखाई है मेरे को, तो आई एम गोना, sorry but I'm going to throw that point back at you. Yeah. The revenge of geography, sir. Yeah. See, these countries, whatever said and done, and ये मेरा logic है sir, please correct me. I'd really be open to criticism in this. देखिए, जो रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी है, हमारी भारत की एक जो लोकेशन है उसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे कैन मक अराउंड विद यू अ लिटिल बिट, बट वो एक लाइन के बाद आपसे नहीं कर सकते, बिकॉज ज्योग्राफी विल नॉट अलाउ इट, allow them to do so. नेपाल है. Correct me if अभी I'm wrong, sir. आप देख लो, सही बोल रहे हो आप. अभी जैसे चाइना के साथ उनका डील हुआ था, जी. Chinese have given them access to the farthest port on the east coast, which is Liaoning, which feeds Beijing. Northernmost, almost about close to 2,500 miles from Kathmandu. हमारा पोर्ट कौन सा है? One is the Hooghly, Kolkata. Yeah. 700 odd kilometers, not even miles. And the other, we have given them, we have said, if you want, you take Vishakhapatnam also, which is our second major port there, which is about 1200 kilometers from Kathmandu. अब logistics आप बता दो, 2500 miles, which works out to how much? About 4,000 kilometers versus 700 or 1200 kilometers. उनको भी पता है, चॉइस नहीं है. But since it is a communist party, completely funded by the Chinese Communist Party, वो तो उसके नौकर हो जाएंगे. आपने तोड़ दिया है, इनको इंश्योर करना है कि टूटा रहना है. टूटे रहेंगे, आपके साथ हैं. That's my understanding. ताकि अगले जब इलेक्शन होगा, आपको नेपाली कांग्रेस आ जाएगा, फिर then you don't have a problem. Yeah, well, उसके अंदर एक और छोटा सा एंगल है नेपाल के अंदर की. देखिए, नेपाल इज स्टिल फाइंडिंग इट्स प्लेस. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग वंस अगेन सर. आई थिंक नेपाल इज स्टिल फाइंडिंग इट्स प्लेस, एंड इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा टू काइंड ऑफ कम अराउंड एंड अभी गेट थोड़ी समझ आ गई है इन लोगों को. हाँ. ओली तो पूरा बिका हुआ है. द रीजन बीइंग, आपने पाइपलाइंस दे दिए हैं उनको. जो 2015 में प्रॉब्लम हुआ था कि उनके जो वो क्या बोलते हैं यार, उनके प्लेन्स वाले को, मदेसीज ने रोड ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिसिपेट कर दिया था. इंडिया के ऊपर भी फूटा था, शायद हमने भी किया होगा. तेल पानी जा नहीं रहा था. अब आपने क्या किया है, ऑयल एंड गैस के लिए उनको पाइपलाइन बना के दे. तो अब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ऑयल रुक गया. तो उनका है, जहां से अनलोडिंग पॉइंट है, उनका तेल जो आता है उसका पाइपलाइन इंडिया ने बना के दिया है कि ये ले जाओ, वहां से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो. कि जो आप टैंकर्स लेके जा रहे थे, आपको टैंकर्स ले जाने की जरूरत नहीं है. रेलवे लाइंस और इम्प्रूव करके दे रहे हो. ठीक है, तो ये चीजें हो रही है, जिसके कारण प्रचंड आपके तरफ आ गया है. ओली तो पूरा बिका हुआ है चीनियों की तरफ. अभी कोशिश ये करना चाहिए कि ओली के पार्टी को और तोड़े. ओली का हिस्सा है, उसको और तोड़ो. बट
चीनी भी करेंगे यार, इन दोनों की सुलह दोबारा कराने की कोशिश तो करेंगे. सो इट्स ऑन अ कस्प, दैट्स व्हाई आई सेड. Hmm. Okay. Just two more, sir. Unknown gunmen. Today, a Taiwanese citizen was arrested in India with along with 50 SIM cards. Any आई डोंट update नो of this अबाउट news? दिस. ताइवानीज होगा क्या होगा, हमने तो कितने दफा बोला है, मैंने आदि ने यार, व्हाई आर यू सो सोल्ड आउट ऑन ताइवानीज. वो भी हान है यार. जो ये 9 डैश लाइन, तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल, साउथ तिब्बत, ये सब तो चियांग kai शेक ने बोला हुआ था. KMT जो ताइवान में है, ताइवानीज पार्लियामेंट ने उसको रद्द किया है, नहीं किया है. तो क्या फर्क पड़ेगा वेदर यू हैव अ ताइवानीज. लेट्स से डेमोक्रेसी कम्स एट सम पॉइंट इन टाइम, कम्युनिस्ट पार्टी हार जाता है, डेमोक्रेसी कम्स एट सम पॉइंट इन टाइम एंड ताइवानीज टेक ओवर दैट एरिया. इज देयर एटीट्यूड गोइंग टू चेंज? No. तो वो तो जो इन्होंने 9 डैश लाइन था, पहले 11 डैश लाइन था, इंक्लूडिंग इनटू वियतनाम. वो 75 में जब ये 60s 70s में लड़ाई चल रही थी, वियतकांग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हेल्प कर रहा था, माओ से तुंग ने उसीलिए उनके 2 लाइन काट दिए थे. तो दैट्स हाउ 11 बिकेम 9 and now 9 has become back to 11, taking into Taiwan. Taiwan. So I'm not surprised he is arrested. Yeah, And I'm sure I, there will be a lot of Taiwanese moles sitting out there. Are we sure he's a Taiwanese citizen? Could have been a Chinese having a Taiwanese passport. आपको कैसे पता चलेगा? सब हान है यार. जैसे वो नेपालीज पासपोर्ट लेके चाइनीज नहीं पकड़ा गया था, yeah, तो चाइनीज पकड़ा गया क्यों? क्योंकि वो उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता जैसे नेपालीज बोलते हैं, तो वो पकड़ा गया. आपने बुरखाली में बात किया होगा, वो उसका तो मिडिल स्टंप उखड़ गया होगा. ताइवानीज है या ताइवानीज सिटीजन है, हान है. आपको कैसे पता कि ये एक्चुअली ताइवानीज है या मेनलैंड चाइना से है, कहाँ से है, क्या है? दिस इज व्हाट चाइना विल ट्राई टू डू यार. जहां से uh, ताइवानीज को मत पकड़ो ना, पहले तो जूते मारो जहां से वो 50 सिम कार्ड लिया है. कौन सा आपको पूरा अपना KYC देना होता है? क्या KYC दिया है? नहीं दिया तो उसको भी उल्टा टांगो. असली तो वो है ना, आया कैसे उसके पास? that is the main thing, sir. That is the main thing. Our friend from Afghanistan says, "Hi, sir. Will exploring the precious mines of Afghanistan by Chinese help Afghanistan or do more harm?" has and wherever Chinese have gone into any country, नरगिस जी, has it helped that country और वो country फक्कड़ हो गया? आप बता दो मेरे को कोई एक country which has done very well with Chinese investment. आप लिख के बता दो. आज तक सारे के सारे या तो फक्कड़ हो चुके हैं या फक्कड़ होने के कागार में खड़े हैं. On the way. आप सोच रहे हो आपको कुछ पैसा इसका मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. इक्विपमेंट उसका, मैन पावर उनका, आपका भी मैन पावर नहीं होगा, सिक्योरिटी उसका, सब कुछ उसका. आपको क्या मिला? Yeah, and the worst part is, आपको वो ऐसी हालत में छोड़ेगा कि ना आप इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे. हाँ बिल्कुल. लेट मी अश्योर यू. अगर ज्यादा ही है, नरगिस जी आपका एक बहुत प्यारा नेबर है, मुझे पता है आपको उस नेबर से बड़ा प्यार है. पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए. ठीक है. एंड लास्ट, ओके, देयर सडनली सुपर स्टिकर्स कमिंग इन. Sir, recently opposition exposed its anti-national activities on Financial Times. Modi ji insists on comparing us with other democracies. How far can a democracy go with an opposition like this? What's the solution? Nothing. वोटर्स के हाथ में यार, इलेक्टोरेट के हाथ में. Exactly. एक सेट ऑफ इलेक्शंस में तो थप्पड़ पड़ गई है. अब नेशनल लेवल में भी उनको साइडलाइन कर दो. जैसे मैंने कहा था, सोच समझ के वोट देना. जो आप समझते हो कि आपके देश के भलाई के लिए काम करेगा, उसके लिए आप वोट दीजिए. तो इसमें एक छोटा सा, मैं हालांकि ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता हूं, एक छोटे, आई वुड से एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल में बात करता हूं. राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, फ्रॉम इंडिपेंडेंस, कांग्रेस हैज बीन
ऑन द सोशलिज्म पाथ। ठीक है ना, ये उनके डीएनए में है, ये इनके डीएनए से जा नहीं सकता, जबकि जनरेशनल शिफ्ट 2-3 जनरेशन आगे जाके चेंज नहीं होता है, वो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये उसी आइडियोलॉजी के साथ पले बड़े हैं। बाकी आपके ओपोजिशन पार्टीज कौन हैं? राम मनोहर लोहिया, लोहिया आइडियोलॉजी से, वो भी सोशलिज्म है, कोई अंतर नहीं है उनमें, दोनों सोशलिज्म में ही है। अभी आप देखो, आपके पास एक पार्टी और या ग्रुप आया है विच इज गिविंग यू एन आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म, कि मैं कैपिटलिज्म को पुश करूंगा, उससे जो मेरे को पैसा मिलता है, आई विल सपोर्ट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नाउ क्योंकि बाकियों के डीएनए में सोशलिज्म जा नहीं सकता है, यू कैनॉट विन इलेक्शंस ऑन एन आइडियोलॉजी दैट मैंने इस पार्टी को डिफीट करना है। That is not an election criteria. That may have been there earlier, like what happened after emergency, where everybody was angry कि इंदिरा गांधी को हराना है। That election was won on the plank कि इंदिरा गांधी को हराना है। क्या हुआ उसके बाद? We all know, वो चल ही नहीं पाई। उसी तरह से ये इंडी अलायंस है ना, इकट्ठे हुए हैं क्या है कि इस पार्टी को हराना है। That is no ideology for the electorate today. There is no emergency in India. There is economic growth and development taking place. No, you have to come with an alternate ideology, which I will recommend to them, is socialistically capitalism. अब आपको कैपिटलिज्म भी चाहिए, आपको सोशलिस्टिक मॉडल्स भी चाहिए। नाउ इन दोनों का सुलह करके कुछ निकालो मॉडल यार तुम, देन देयर इज एन ऑल्टरनेट मॉडल। अभी तो कोई नहीं है, आपके पास एक मॉडल है और दूसरा है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं कि इसको हराना है। Will the electorate buy that? So ये तो उन लोगों ने सोचना है क्या करना है। Now just because one party says that I am going in for development, it doesn't mean all the cadre whom he is putting forward are there for development. Yes, they are Correct. there for development, but maybe not for the government, maybe for themselves. So you have to be very careful. Vote for the person. पहले भी मैंने बोला है, आदमी देख के वोट करो कि भाई विल ही डू गुड फॉर यू। इफ यू डोंट फाइंड एनीबडी गुड फॉर यू, नोटा दबा दीजिए। आपको अब नोटा का ऑप्शन दिया हुआ है। सो वोट इंटेलिजेंटली, बट काफी चैलेंज आएंगे आपको, अभी काफी चैलेंज आएंगे। ये इतने आसानी से दबने वाला नहीं है ये ओल्ड स्टेट, ओल्ड डीप स्टेट। ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, वी हैव टू बी केयरफुल। एनआईए का इसीलिए आप देख लो कितना आपको बार बार आ रहा है कि इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इधर रेड गया, उधर रेड गया। दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन आवर कंट्री। काफी इनके अटेम्प्ट्स को हमने ब्लॉक कर दिया। सो दे जस्ट नीड वन स्लिप अप टू बी अ सक्सेस। जैसे वो एम्बुश हुआ था, एक जगह आपने पलक झपका and he has achieved the same. That is the yeah. I mean, that scares us, sir. There's no question about it. वो सुन के थोड़ा सा, guys, this was fantastic. I mean, we have literally so many people still sitting with us. 1750, 1760 people still sitting with us. Thank you. Guys, thank you so much for joining us on this beautiful Saturday afternoon, sir. सबसे पहले तो आपको धन्यवाद for the second last show of this year. Yes, Live show. of 2023. एक मैं आपसे बीच में खींचूंगा फॉर इंडिया रशिया रिलेशन, वो तो करना है, वो दैट विल बी अ रिकॉर्डेड शो, छोटा सा, बिकॉज देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट, तो एक छोटा सा रिकॉर्डेड शो करेंगे उसके ऊपर। एंड वी विल कवर अप आवर सैटरडे सेशन व्हिच इज ऑन द 30th of December 2023, one day before the year gets over. Sir, thank you so much. Always a pleasure talking to you. Thank you so much. And there's one more super sticker which has come from Problem Ji. Thank you so much. But this is a huge question. We will try and get sir to answer this sometime in the future.
views on startups, defense sectors, private defense research, this, that. This is a huge, huge question. I don't want to disrespect you, Plavlam ji, but आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है. It's something that we won't be able to answer in this much time. We already crossed at 1 hour and 40 minutes. IIT Madras is one of the biggest research parks. There are a lot of startups. See, a lot of things for the defense sector on the startups are dual technology. It can also be used in the civil domain. Private defense research क्या अपने government defense research में भी मेरा I have a lot of issue because we have a lot of STEM education, lot of maximum in number 2 in the world today, and quite a lot of our students are opting for STEM, that is science, technology, engineering and mathematics. Right. Innovation index में भी हम काफी आगे हैं, 81 से अभी 40 के ऊपर आ गए हैं. That means nothing. हमारे पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं. वी आर वेरी लो इन पब्लिशिंग पेपर्स, वेल रिसर्च्ड पेपर्स. वी आर वेरी लो इन एप्लीकेशन. सो R&D के अंदर पैसा चाहिए. पैसे डालने में सब कतराते हैं. आई थिंक all told, whether I take the government and the private sector, is just about barely touching 1%, which is nothing. Countries who are doing well in this part are investing 6 to 12% in R&D. R&D has to be in 3 parts: pure science, applied science in 2 parts. That is, one part is pure science, other is applied science, which is in again 2 parts. Applied science, which will improve existing systems that are there, and applied science, which will give you new systems. कहाँ कौन करता है? By the way, we are making engine greenfield. इंजन नहीं बनता हमारे देश में. आपने सेंटर फॉर इंजन्स तो पता नहीं कब का खड़ा हुआ है. कोई R&D का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना. Because when you go down the R&D route and all this, there will be slip-ups. You should be ready to accept slip-ups. So that's the whole problem. Specialized study on strategic defense, all universities are supposed to have. Department of Defense and Strategic Studies. There are a few universities who are utilizing that, but quite a lot of universities are not. Manipal में है, Amity में है, कई universities में है, JNU में है, I think जिंदल में है, but लोगों को पता नहीं है ना. Department of Defense and Strategic Studies. It has been made compulsory, but people are slow in picking up. यहाँ पे मद्रास यूनिवर्सिटी में भी है. So आ रहा है, अभी शुरू हुआ है ना. शुरू होते ही आपको you won't get funding कहाँ से. It takes time. Absolutely. I think if I may add 2 bits, देखो थोड़ा सा चीजें देखिए आप पिछले थोड़े टाइम के अंदर. Things have started creeping out. ऐसी बात नहीं है कि we are not doing anything. So a lot of things are creeping out. अरे ड्रोन्स जितने आपके और एंटी ड्रोन सिस्टम होम ग्रोन है यार. प्राइवेट सेक्टर ने दिया है जी. आर्मी इतना सारा ड्रोन से इस्तेमाल कर रहा है. एंटी ड्रोन सिस्टम विच इज बोथ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक. काइनेटिक मतलब यू विल हिट इट एंड ड्रॉप इट डाउन. काइनेटिक मींस इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से यू विल टेक कंट्रोल ऑफ इट. दोनों ऑल होम ग्रोन है. हम डिंडोरा नहीं पीटते हैं. चीन बहुत डिंडोरा पीटता है. क्या करें? यही तो बोल रहा हूं, हमें अपना नैरेटिव बनाना चाहिए. थोड़ा न्यूज़ देखो आप, आपको पता चल जाएगा. पहले आता था ड्रोन शॉट डाउन इन पंजाब विद ड्रग्स नॉट फाउंड, वेपन्स नॉट फाउंड. आजकल न्यूज़ आता है ड्रोन ब्रॉट डाउन, ड्रग्स फाउंड, वेपन्स फाउंड. शॉट डाउन एंड ब्रॉट डाउन के अंदर 2 डिफरेंस होती हैं. I'd leave it at that. Sir, thank you so much and wish you have a great weekend. And all of you guys, like, subscribe before you leave. Jai Hind. Thank you. Jai Bharatam. Thank you.